So guys, previously we did questions on radioactivity. तो यार अब आज जो है ना तीन टॉपिक्स आपके थ्योरी के बच गए हैं. So उसमें से आई वाज प्लानिंग कि यार थ्योरी वाला टॉपिक पहले करा दूं. So the three topics that are left, उसमें से आज एक से स्टार्ट कर लेते हैं. ये चूंकि थ्योरी वाला है ना, आई वुड रादर वांट टू गेट डन विद दिस टॉपिक ताकि यू गाइस हैव टाइम to learn the theory wala portion as well. So this topic is what we refer to by the term medical physics. 70% theory है, बाकी 30% calculations हैं. So this is also known as remote sensing. So यार इसमें we'll be discussing four things. So as I was saying यार इसमें आपके पास चार सब टॉपिक्स हैं. So the first one is the working of X-rays. आज इसको कर लेंगे. Second one is the working of ultrasounds. X-rays and ultrasounds ज़्यादा questions आते हैं और इसकी theory भी थोड़ी ज़्यादा है. The third one is MRI. And the fourth one is a CT scan. MRI and CT scan are relatively easier. X-rays and ultrasounds, उसमें majority of the questions आते हैं. Here, the first is properties and production of X-rays. तो यार properties के अंदर बस दो तीन properties याद रख लेना और मैं वही mention कर देता हूँ. So first property, they have a typical wavelength in the order of 10 to the power of minus 10 meters. Second property, they are used to locate fractures in bones. Third property, they can ionize matter. And last property, they are known to darken photographic films. You might need these properties on and off. वो मैंने list कर दी हैं. बस दो तीन learn कर लेना इनमें. Next is, और ये actual working है. So first चीज आज की क्लास में ये डिस्कस करेंगे कि how are X-rays produced. थोड़ा सा ये बोरिंग है क्योंकि it's more of a theory kind of a thing. Calculations का पोर्शन भी है लेकिन कम है. तो एक्सरेज की प्रोडक्शन कैसे होती है ना, इसका एक पूरा लेआउट पहले मैं डायग्राम ड्रॉ करके आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ. वो आप मेरे साथ स्टेटमेंट्स की फॉर्म में लिख दूंगा, वो लर्न कर लीजिएगा. So the tube which I'm constructing with the black marker, this tube is referred to by the term X-ray tube. So X-rays are produced inside this compartment known as the X-ray tube. अब इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं. Starting from the left hand side, the first thing you would come across is a heater. मैं labeling साथ साथ कर रहा हूँ. This heater can be connected either to a 6 volt supply provided by the heat current is referred to by the term tube current. Okay, so a heater is positioned on one side. It can operate from 6 volts up to 12 volts, and the current supplied by the heater is known as a tube current. Ibrahim ने पूछा is the diagram important? यार इब्राहिम 90% of the times तो X-rays की प्रोडक्शन का नोट पूछते हैं, तो स्टेटमेंट्स आई बिलीव ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू डायग्राम. तो कभी डायग्राम को अलग से पूछा नहीं है एज सच. आई गेस ये सिर्फ समझने के लिए होता है. रेलेवेंट वर्डिंग्स याद करना आई गेस ज्यादा जरूरी है. एनीवेज, नाउ राइट नेक्स्ट टू द हीटर, the first component which I'm constructing with the green colored marker,
This is termed as a metal filament. It is sometimes also called a cathode. तो ये आपका second component हो गया. Next चीज, on the other side, the triangle which I've constructed, this component is referred to by the term target anode. Now, the cathode, the green colored component, and the target anode, the black colored component, they are both connected with a power supply. And this power supply is a variable power supply. The voltage can be anywhere in between 20 kilovolts going up to 100 kilovolts. ठीक है, तो एक हीटर आ गया, उसके साथ एक मेटल फिलामेंट आ गया, दूसरी साइड पे टारगेट एनोड आ गया. रोहिल सही लिखा है आपने. The metal filament, the green colored component, and the target anode, the black colored component, are both connected with a variable power supply whose voltage varies anywhere from 20 kilovolts and it can go up to as high as 100 kilovolts. Now, using this diagram, stepwise, X-rays कैसे produce होंगे उसकी working. So the principle is as follows. कि आप metal filament को heat करोगे, fermionic emission occur करेगा, and electrons are produced. तो मैं electrons को light blue color से show कर देता हूं. ये पहला step हो गया. The second point, these electrons will accelerate towards the target anode. Second point हो गया. Learn भी इसी तरीके से कर लेना और भले bullet form में लिख देना in the exams जैसे आपको सही लगता है. Third point, when these electrons will strike the target anode, ये important है, comma, their kinetic energy will be absorbed by the electrons of the target anode these electrons of the target anode will undergo excitation, causing them to jump from their lower energy levels into their higher energy levels. हाँ, ये वर्डिंग रोहिल आपकी सही है. फोर्थ वाला पॉइंट, when these electrons undergo de-excitation, comma, they emit electromagnetic radiations of wavelength
10 to the power of minus 10 meters. Hence, X-rays are produced. ठीक है, सो पहले टारगेट एनोड के इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट करेंगे और एक्साइट करके they will jump into a higher energy level. So this is all going on inside the target anode, the portion which I'm circling right now for you. ठीक है, so the blue colored electrons will strike the target anode. Consequently, the electrons within the target anode will undergo excitation and then jump from their lower energy level into their higher energy level. When these electrons undergo de-excitation, as they drop down back to their lower energy level, so when they undergo de-excitation, they emit electromagnetic radiations of wavelength 10 to the power of minus 10 meters. And hence, that is when we say X-rays are going to be produced. So मैं diagram पे show करता हूँ कि electrons ने आके hit किया, that is the blue colored one, और target anode से X-rays produce होंगी, ये मैं red color से बना देता हूँ. ठीक है, तो प्रोडक्शन ऑफ एक्सरेज का पूछते हैं. एज आई टोल्ड इब्राहिम, क्या डायग्राम तो इतना रेलेवेंट नहीं है, लेकिन वर्डिंग्स याद रख लीजिएगा, यूजुअली 4 to 5 मार्क्स की आपके पास आती है. ठीक है, मोहित ने लिखा हुआ था एक क्वेश्चन, इज द सिस्टम इन वैक्यूम? हाँ, सो द ट्यूब हैज अ वैक्यूम इन बिटवीन. बाकी रोहिल ने लिखा था चार्ज कैरियर्स फॉर्म होंगे ऑन द टारगेट, बिल्कुल सही है. तो इलेक्ट्रॉन्स ने आकर टारगेट एनोड को बम्बार्ड किया. एनर्जी के ट्रांसफर होने से टारगेट एनोड के इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट हुए, और जब वो डी एक्साइट करेंगे तो एनर्जी विल बी गिवन आउट इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस. And these electromagnetic waves which are produced have a wavelength in the order of 10 to the power of minus 10 meters. That is why we say the production of X-rays has occurred. ये तो पूरी चीज हो गई. अब जो नेक्स्ट चीज डिस्कस करनी है, ये मैं नोट करके लिख रहा हूं. एग्जाम में ये क्वेश्चन भी बहुत फ्रीक्वेंटली आता है. स्टेटमेंट देख लीजिएगा. The intensity of X-rays produced is controlled by the magnitude of tube current. In case if you have forgotten कि मैंने tube current किस चीज को रेफर किया था ना, let me go back to the diagram and let me just highlight with a circle over here so that you can see what was the tube current. So tube current was basically the current supplied by the heater. ठीक है, so the intensity of the X-rays is controlled by the tube current. How come? तो वो डिस्कस कर लेते हैं. I'm sure you would agree कि अगर आपका ट्यूब करंट इंक्रीज करेगा तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स इमिट होंगे, और जब ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स इमिट होंगे तो मोर नंबर ऑफ एक्स-रेज विल बी प्रोड्यूस्ड. And this will cause the intensity of X-rays to increase. तो जितना ज्यादा ट्यूब करंट आप सप्लाई करोगे ना, उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होंगे, उतने ही ज्यादा एक्स-रेज प्रोड्यूस होंगी, and producing more number of X-rays is as good as saying the intensity of X-rays will increase. ये पहला फैक्टर हो गया. अच्छा, सेकंड फैक्टर जो एग्जाम में पूछते हैं, दैट इज, ये भी मैं आई थिंक नोट करके लिख लेता हूं. ये भी काफी कॉमनली एग्जाम में पूछा जाता है.
The frequency, also called hardness or penetration power of the X-rays, is controlled by the potential difference supplied between the cathode and the anode. So which potential difference am I referring to? पहले diagram पे देख लो, statement read कर लो, and then I'll shift up. The frequency, also called hardness or penetration power of the X-rays, is controlled by the potential difference supplied between the cathode and the anode. So I'm referring to the potential difference जो मैंने orange color से show किया था. Again, I'm circling it right now. आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा. जी रोहेल, एक सेकेंड तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर अभी दे देता हूँ. सो 2 सेकेंड रुक जाना रोहेल, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दे देता हूँ. सो दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस between the cathode and the anode. This potential difference affects the frequency of the X-rays, also known as the hardness or the penetration power. So अब इस voltage की क्या importance है? So I guess you would all agree कि अगर आप potential difference को increase करोगे, मैं ब्लैक से जो है ना वो फैक्चुअल स्टेटमेंट लिखे हैं मैंने, और रेड से मैं उनकी रीजनिंग लिख रहा हूं, दोनों याद रखिएगा. तो अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स विल गेन मोर काइनेटिक एनर्जी, and based on the formula E is equal to HF, if kinetic energy will increase, then the X-ray photons will be produced with a higher frequency. Hence, if energy increases, comma, X-ray photons will be emitted with a greater frequency. ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट्स याद रखिएगा. दोनों स्टेटमेंट्स में क्या फर्क है वो दोबारा अंडरस्टैंड करो. पहला स्टेटमेंट मैंने लिखा था कि अगर आप ट्यूब करंट को ज्यादा करोगे ना, तो दैट विल रिजल्ट इन मोर नंबर ऑफ एक्स रेज बीइंग प्रोड्यूस्ड. ठीक है, लेट मी रिपीट माई सेल्फ. इफ यू इंक्रीज द ट्यूब करंट, that will cause more number of electrons to be emitted, and that will finally result in more number of X-ray photons being produced. ज्यादा number of photons का produce होना, उसको हम कहते हैं कि the intensity of X-ray has increased. तो ये एक चीज हो गई. और अगर आपको प्रोड्यूस होने वाले एक्स-रेज की फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करना है, तो वो काम आपका वोल्टेज करेगा. सो पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज करेगा, इलेक्ट्रॉन्स विल गेन मोर एनर्जी, एनर्जी ज्यादा होगी तो फ्रीक्वेंसी हायर होगी. Hence, if energy increases, X-ray photons will be emitted with a greater frequency. ठीक है, तो दो फैक्टर्स हो गए. इंटेंसिटी कंट्रोल करने के लिए ट्यूब करंट, और फ्रीक्वेंसी कंट्रोल करने के लिए greater potential difference. Now, before I continue with the next statement, ये सारे स्टेटमेंट्स 1 1 2 2 मार्क्स के एग्जाम्स में आते हैं. उनको जरा लर्न करने का काम प्लीज कर लीजिएगा. जी रोहिल, तुमने कहा था कैन एक्सरेज बी प्रोड्यूस बाय फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन. तो मोस्ट ऑफ द मेटल्स रोहिल, मोस्ट ऑफ द मेटल्स जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस करते हैं ना, वो अल्ट्रावायलेट की होती है. तो एक्सरेज कम्स आफ्टर दैट. सो देयर आर वेरी वेरी फ्यू मेटल्स कि जो आपके पास इतने कॉमनली अवेलेबल नहीं है, which have the capability of emitting X-rays due to the phenomena of photoelectric emission. Most metals emit radiations up to ultraviolet.
सो बहुत कम होते हैं, इसलिए यहाँ पे यूज करना इतना इतना इजी नहीं होता। ओके जी, अब अगला स्टेटमेंट। अब जो नेक्स्ट वाला स्टेटमेंट लिख रहा हूं, इसकी जरा वर्डिंग्स को फॉलो कर लो। सिंस emitted electrons have a range of kinetic energies, therefore the X-ray photons produced also have a range of frequencies. Full stop. The low frequency X-rays, also called soft X-rays, get absorbed by the patient's body. Hence, they have a limited use, which is why an aluminum filter is used to stop these soft X-rays from entering into the patient's body. So ये wording देखो क्या लिखी हुई है. Since emitted electrons have a range of kinetic energies, therefore the X-ray photons produced also have a range of frequencies. The low frequency, let me highlight this term, X-rays, which are also called soft X-rays, they do more harm than good. So they get absorbed by the patient's body. Hence, they have a very limited usage, which is why an aluminum filter, I'll show that to you on the diagram right now, is used to stop these soft X-rays from entering into the patient's body. So what they do is, कि जो X-rays produce हुई थी, let me go back to the diagram. These X-rays, the ones which I've shown you, they have a range of frequencies. So some of these are high frequency X-rays, the ones that you are seeing. The high frequency X-rays are called hard X-rays, and some of them are low frequency X-rays known as soft X-rays. So what basically engineers do is they place an aluminum filter. Label कर देता हूं. The purpose of this aluminum filter is कि जितनी soft X-rays होंगी ना वो रुक जाएंगी, and only the hard X-rays will be able to pass through. It is these hard X-rays जिनको हम later on use करते हैं for the patient. So soft X-rays का नुकसान ये होता है, they get absorbed by the patient's body. So they do more harm than good. So इसीलिए technicians prefer to use hard X-rays, उससे image अच्छा बनता है. So the aluminum filter will block the soft X-rays and will only allow the hard X-rays to pass through. And then these hard X-rays are eventually targeted towards the patient ताकि इससे फिर हम एक्सरे के इमेजेस वगैरह फॉर्म कर सके. ठीक है, अब तक देखिए मैंने आपको 5 चीजें बता दी हैं. पहली चीज बता दी
एक्सरेज की प्रोडक्शन कैसे होगी. तो लेट मी जस्ट गो बैक टुवर्ड्स द आइडिया. इफ दे आस्क यू प्रोडक्शन ऑफ एक्सरेज, तो जितना पोर्शन में हाईलाइट कर रहा हूं ना, ये सारा का सारा एक्सरे की प्रोडक्शन का था. आपकी स्क्रीन पर अभी आ जाएगा. ठीक है. सो द कर्ली ब्रैकेट शोन विद द पिंक कलर इज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एक्सरेज. ओके, नेक्स्ट मैंने बता दिया कि इंटेंसिटी को कैसे कंट्रोल करते हैं. So next वाला paragraph was with regards to how the intensity of X-rays can be controlled. ठीक है, intensity referring to the number of X-rays produced per unit time. फिर उसके बाद वाला how the frequency of X-rays can be controlled. ठीक है, फिर उसके बाद वाला how do we prevent soft X-rays from entering the patient. तो आपकी स्क्रीन पे आ जाए. So the next bracket was soft X-rays versus hard X-rays. So we prefer to use hard X-rays. So soft X-rays needs to be stopped from entering into the patient's body. So how do we achieve that? ये वाली चीज हो गई. अब एक फाइनल स्टेटमेंट और फिर इसकी आगे की थ्योरी डिस्कस करते हैं. द लास्ट स्टेटमेंट, इसको भी आई बिलीव नोट करके लिख लेता हूं. ये सिंपल सी वर्डिंग्स हैं. आई गेस अगर आप साथ साथ रीड करोगे तो आप फॉलो कर लोगे. If the incoming electron transfers all of its energy to the target anode, comma, then the X-rays produced will have the highest frequency and the shortest wavelength. These X-rays are called, these wavelengths are called rather, एक सेकेंड ना, this shortest wavelength is also called cut off wavelength. So इसकी भी definition exam में पूछते हैं. If they ask you the meaning of the term, what is cut off wavelength? सिर्फ मेरे last paragraph को review करो, where it says if the incoming electron transfers all of its energy, यदि मैं टर्म को जरा सही कर दूंगा, वो गलती से मुझसे कैंसिल आउट हो गया था. So if the incoming electron transfers all of its energy to the target anode, comma, then the X-rays produced will have the highest frequency and the shortest wavelength. This shortest wavelength is also called cutoff wavelength. Exams के अंदर sometimes they ask you to define the term. What is meant by the term cutoff wavelength? तो हर सेक्शन जो पूछते हैं ना थ्योरी के अंदर, उसको मैंने सेपरेटली आपके लिए हाईलाइट करके दे दिया है. तो फिर लर्न करने का काम अकॉर्डिंगली कर लीजिएगा. तो वी हैव सीन के एक्सरेज प्रोड्यूस कैसे होंगे,
We have seen X-rays produced will have a range of frequencies. We have seen the hard X-rays are the ones that that are going to be used for X-ray imaging, whereas the soft X-rays are the ones that will do more harm than good because they will get absorbed in the patient's body. So we need to stop the soft X-rays. So we were able to achieve that by placing an aluminum filter. Then lastly, we have seen if the incoming electron transfers all of its energy to the target anode, then this would result in the X-ray photons of the highest frequency and the shortest wavelength. This wavelength is sometimes known as cut off wavelength. अच्छा, अब फर्दर आगे की वर्किंग करनी है, तो ये तो पूरा नोट का काम हो गया। तो इसको बिट्स एंड पीसेस में वो पूछते रहते हैं, वो जब टाइम मिले तो इसको आप लर्न करने का काम कर लीजिएगा। अब मूविंग ऑन फर्दर, तो मैं नेक्स्ट वाले पेज पे जा रहा हूँ। तो दैट विल बी द स्लाइड नंबर 2। तो अगली वाली वर्किंग करनी है। एक सेकेंड रुकिएगा, पेज ठीक है। सो अब जो नेक्स्ट वाली वर्किंग करनी है, दिस कम्स अंडर द हेडिंग ऑफ अटेन्युएशन ऑफ एक्सरेज। तो हमने एक्सरेज को प्रोड्यूस करने का काम कर दिया, अब हम एक्सरेज को यूज कैसे करेंगे ना, उसकी डिस्कशन करनी है। सो व्हाट इज मेंट बाय द टर्म अटेन्युएशन? ये सिंपल है, इसमें एक फॉर्मूला डिस्कस करना है और उसकी एप्लीकेशन करनी है। सो द टर्म अटेन्युएशन इज डिफाइंड एज, सिंपल सी डेफिनेशन है, आई थिंक अगर आप साथ साथ रीड करोगे तो आप खुद ही फॉलो कर लोगे। द लॉस इन पावर और द लॉस इन इंटेंसिटी of a radiation as it passes through living matter। तो बिल्कुल बेसिक लेवल पे ये सोचो कि अगर आपकी ह्यूमन बॉडी का कोई एक सेक्शन है, लेट्स सपोज दिस बॉक्स ओवर हियर कैन रिप्रेजेंट अ फ्लैश थ्रू ह्यूमन बॉडी। अब ये एक बहुत कॉमन ऑब्जर्वेशन है कि अगर आप ह्यूमन बॉडी के ऊपर एक्सरेज को इंसिडेंट करोगे, so imagine if the incident amount is I naught, तो मोस्ट डेफिनेटली आप सब लोग बिलीव करोगे कि अगर इंसिडेंट अमाउंट I naught है, so incident intensity is I naught, then surely some of this intensity will be absorbed by the material. Consequently, the intensity that will transmit from the other side, मैं transmitted amount का नाम I रख देता हूं और मैं I के लिए लिख देता हूं कि I is the transmitted intensity. So most definitely, the transmitted intensity will always be less than the incident amount. तो अगर incident आपने I naught किया था, तो transmitted amount definitely कम होगा, because some amount is going to be absorbed by the medium. In this case, the medium is the flesh. If I ask you, कि यार ये final intensity, transmitted intensity and incident intensity की आपस की क्या relationship बनेगी? So it is believed that the two values are related according to the equation I is equal to I naught e to the power of minus mu x. So the incident amount I naught and the transmitted amount I are known to be interrelated according to the following equation.
नाउ इस इक्वेशन के अंदर x रिप्रेजेंट करता है द थिकनेस ऑफ द मीडियम। अभी मैं कैलकुलेशन में आपको बताऊंगा कि इसको कैसे वर्कआउट करना है। एंड म्यू इज अ कांस्टेंट known as known as इसके तीन नाम होते हैं। Some people refer to this constant by the term linear attenuation constant. Some people refer to this by the term linear absorption constant. अब इनमें से कोई भी टर्म आप यूज कर लीजिएगा और इसको अप्लाई कैसे करना है वो बता देता हूं। Or some students refer to this constant by the term linear attenuation coefficient. So this constant value depends on the medium. So thickness is generally measured in units of meters, and this constant mu is generally measured in units of meter inverse. So every medium is known to have a unique value of mu. Like for example, if you notice, this equation is very similar to the equation of radioactivity, as Rohel has pointed out. बिल्कुल जो radioactivity वाला formula था, बिल्कुल वैसी ही equation आपकी X-rays भी follow करती हैं। तो पहले understand करो मैंने क्या लिखा है। So the first thing which I have stated is that the term attenuation is defined as a loss in intensity or a loss in power of a radiation as it passes through living matter. So if the incident amount is I naught, and if the transmitted amount is I, then surely the transmitted amount will always be less than the incident amount. Why? Because some amount of intensity will always be absorbed by the medium through which it is traveling. तो रोहिल की वर्डिंग सही है, बिल्कुल सिमिलर टू रेडियो एक्टिव डिके, बिल्कुल सिमिलर टू रेडियो एक्टिव डिके। यहाँ पर भी ये हो रहा है कि ह्यूमन बॉडी की कैपेसिटी होती है टू एब्जॉर्ब रेडिएशंस। So depending on how strong is this absorbing capacity, the transmitted amount will always be less as compared to the incident amount. So I will always be less as compared to I naught. So the two quantities I and I naught are known to be interrelated according to this equation. And in this equation, X represents the thickness of the medium, and mu is a constant for any medium known as linear attenuation constant, linear absorption constant, linear attenuation coefficient, any one of these three terms. तो यार अब इस फॉर्मूले को अप्लाई कैसे करेंगे और इससे हमें पता क्या चलेगा? So let me just give you a very simple example. Imagine कि मैं अगर एक सिनेरियो आपके सामने बनाता हूँ, because this scenario will explain you X-rays काम कैसे करते हैं. It's a very interesting phenomena, and I guess you'll be able to appreciate it as well. Suppose करें कि मैंने डायग्राम के अंदर फ्लैश अज्यूम किया हुआ है, ठीक है? Now let us suppose कि मैंने आपको फ्लैश की थिकनेस प्रोवाइड कर दी है। मैं कोई भी ऐसा नंबर दे देता हूँ जिस नंबर के साथ मैं आपको कैलकुलेशन पे असेस कर सकूं। तो इमेजिन कर लें कि अगर आपके पास थिकनेस की वैल्यू है फ्लैश की x इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर्स, बल्कि कन्वर्ट करके मीटर्स में ही दे देता हूँ। सो मीडियम की थिकनेस है 0.14 मीटर्स, ठीक है? तो 14 सेंटीमीटर थिक फ्लैश है ह्यूमन बॉडी के अंदर। अब आपने इसके ऊपर एक्सरे को इंसिडेंट किया, द इंसिडेंट अमाउंट इज आई नॉट एंड द ट्रांसमिटेड अमाउंट इज आई। अगर मैं आपको फ्लैश की एब्जॉर्बिंग कैपेबिलिटी प्रोवाइड कर दूं, सो म्यू वाज द लीनियर एब्जॉर्प्शन कांस्टेंट। सपोज करें कि फ्लैश की मैंने आपको एब्जॉर्बिंग कैपेबिलिटी बता दी है इतनी,
ये नंबर्स एग्जाम में गिवन होंगे, है ना? सो अगर थिकनेस है 14 सेंटीमीटर्स, 0.14 meters, and the absorbing constant for flesh is given to you as 0.23 per meter. And if I ask you, calculate, ये wording गौर से देखो, the fraction transmitted through flesh. Okay, so the question is asking you, calculate how much fraction of the intensity is going to be transmitted through flesh. So fraction transmitted का मतलब है कि जो फॉर्मूला मैंने ऊपर लिखा था ना, I is equal to I naught e to the power of minus mu x. फ्रैक्शन ट्रांसमिटेड का मतलब है कि मुझे ये क्वांटिटी कैलकुलेट करनी है, I अपॉन I नॉट refers to the fraction transmitted. देखते हैं कितना रिजल्ट आएगा, एंड देन लेट्स सी कि ये रिजल्ट हमें क्या बताएगा. सो e to the power of mu की वैल्यू फॉर फ्लैश इज गिवन, थिकनेस ऑफ द मीडियम इज आल्सो गिवन. अब जरा अगर आप नंबर्स को कैलकुलेट करने के लिए यूज करते हो, एंड इफ आई आस्क यू कि यार फाइनल आंसर कितना बन रहा है, एंड देन लेट्स सी व्हाट विल दिस आंसर टेल अस. सो आई बिलीव इसका जो आंसर आपके पास आ रहा होगा, ये आ रहा होगा 0. हाँ बिल्कुल है वो कॉन्सेप्ट, अभी वो भी करते हैं. 0.97. अब इसको फिजिकली अंडरस्टैंड करो जो सलेमान ने आंसर दिया है. 0.97 अगर आप परसेंटेज में लिखोगे आपको समझना आसान हो जाएगा. 0.97 का मतलब है वी आर एक्सपेक्टिंग 97%, 97% of the incident intensity is able to pass through flesh. Only 3% is absorbed, है ना? ये भी आप कह सकते हैं. सो इसका मतलब है कि I अपॉन I नॉट का आंसर जब भी क्लोज टू 1 होगा, ठीक है, क्लोज टू 1 होगा, देन दिस वुड मीन कि मेजॉरिटी गेट्स ट्रांसमिटेड एंड वेरी लिटिल गेट्स absorbed. So this explains why फ्लैश का जब आप एक्सरे निकालते हो तो वो आपके पास ब्लैक कलर का आता है ना? इफ यू आर वंडरिंग कि ब्लैक कलर के आने का क्या मतलब है, सो लिटरली ब्लैक का फिजिकल टर्म्स में ये मतलब है कि इफ दिस इज फ्लैश एंड इफ everything passes through flesh, majority of the portion passes through flesh because the fraction is very close to 1. If everything practically passes through, इसका मतलब है कि जो फिल्म पीछे पड़ी हुई होगी ना, उसके ऊपर बहुत हाई एक्सपोजर होगा एक्सरे का. So the film will have a very high X-ray exposure, and consequently you would expect the film to be very much black in color. So flesh का image black इसलिए बनता है because flesh is unable to stop any radiations. So very little intensity or fraction gets absorbed, and most of the fraction, majority of the fraction gets transmitted. So that explains that the result was very, very close to 1. जब भी ये scenario आएगा ना कि the result is going to be pretty close to 1, then that would imply
hardly anything is getting absorbed, or alternately, almost everything is able to pass through. So the X-ray film will have a very high exposure, and that is why we say the film is going to be dark black in color. ये तो एक केस हो गया. अच्छा, अब इसके अगेंस्ट फ्लैश के बजाय मैं अगर सिनेरियो चेंज कर दूं और फ्लैश के बजाय अगर मैं सॉफ्ट टिश्यू लेकर आ जाऊं for the same thickness, so the same thickness as before, only this time the value of mu is going to be higher. So the value of mu is, let's suppose, higher than before. तो मैंने नंबर को चेंज कर दिया है. If I ask you the same question, ये सॉफ्ट टिश्यू के साथ क्या सिचुएशन बनेगी? So the question is the same. Calculate the fraction transmitted through soft tissue. So if you apply the same exact working, I upon I naught is equal to e to the power of minus mu x. So since now the value of mu is considerably greater, तो आपका रिजल्ट अब ये बनेगा. आई बिलीव ये वाला भी आंसर किसी ने कैलकुलेट कर लिया होगा. तो ये आंसर मेरी स्क्रीन पर अभी आ नहीं रहा. सुलेमान देखो कितना बनता है. और अब ये जो आंसर आएगा इसकी बेसिस पे जरा कंक्लूड करते हैं कि व्हाट इज दिस आंसर गोइंग टू टेल अस. तो ये आंसर मेरी स्क्रीन पे आ रहा है. ओके, 0. सुलेमान डेसिमल सही लिखे. ठीक है. अच्छा सुलेमान, एक काम और कर लो. मैं चाह रहा हूँ 3 स्टेजेस में वर्किंग करा दूं. सो एक काम ये कर लो कि म्यू की वैल्यू को मैं 35 के बजाय 3.5 कर देता हूँ. यार guys, I'm changing this number so that I can do this calculation in 3 different steps. I'm changing 35 to 3.5. So just quickly, Suleiman, do this calculation again. I've changed the number for soft tissue from 35 to 3.5. ताकि मैं वर्किंग को 3 स्टेप्स में डिवाइड कर दूं. सो दिस टाइम आई बिलीव आंसर मेरी स्क्रीन पर आ रहा है. परफेक्ट आंसर आ रहा है. 0. कुछ परसेंटेज की टर्म से बोलोगे ये आंसर क्या बता रहा है? 61% is transmitted. ठीक है ना? और 39% is absorbed. तो ये आंसर आपको इस बात की रिकग्निशन दे रहा है कि जब आप सॉफ्ट टिश्यू को रखोगे तो इसका एब्जॉर्बिंग पावर कंपैरेटिवली ज्यादा होगा. सो सम अमाउंट विल गेट एब्जॉर्ब्ड, सम अमाउंट विल पास थ्रू. तो इसके अंदर इफ देयर इज एन एक्सरे फिल्म पोजिशन्ड, सो एक्सरे फिल्म का मीडियम एक्सपोजर होगा. और मीडियम एक्सपोजर का मतलब है दिस वुड रिजल्ट इन अ ग्रे इमेज. पहले ब्लैक लिखा था ना मैंने, अब मैंने उसको लिख दिया ग्रे इमेज है ना. तो प्रीवियस वर्सेस दिस कंडीशन में फर्क आपको नजर आ रहा होगा. लेस डार्क, जिसको रोहेल लेस डार्क लिख रहा है ना, उसको मैंने ग्रे टोन्स के साथ रिप्रेजेंट कर दिया है. सही है. तो लेस लेस ब्लैक होगा या मोर टूवर्ड्स ग्रे रीजन होगा, है ना. डायग्राम में भी देखिएगा मैंने शो किया है कि 61% is transmitted, 39% is absorbed. So then this is going to result in what is referred to as a less black image or a less dark image. That is a gray image. And then
फाइनली अगर आपके पास ह्यूमन बॉडी के अंदर मैं किसी बोन का एग्जांपल ले लूं, तो बोन के सिनेरियो के अंदर क्या होगा? तो डायग्राम पे चेक कीजिएगा। फॉर द सेम थिकनेस, बोन के लिए म्यू की वैल्यू मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूँ। सपोज कीजिएगा म्यू की वैल्यू 18 है या 28 है, लेट्स से। These numbers will be given to you in the exams, huh? And same question. So calculate fraction transmitted to bone. So wouldn't you agree कि अगर मैं ये वाली वर्किंग अब बोन के लिए करूंगा, so this will be my answer. ये आंसर मुझे चाहिए ताकि आपको समझ में आ जाए कि एक्सरे का इमेज ये बैकग्राउंड में क्या काम चल रहा होता है। ये आंसर आ रहा है 0.02 कर देता हूँ। 0.02 literally means 2% transmitted, 98% absorbed. तो जनाब अगर 2% ट्रांसमिट हुआ है और 98% एब्जॉर्ब हो गया है, तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ कि अगर आई अपॉन आई नॉट का आंसर क्लोज टू जीरो होगा, तो वेरी वेरी लिटिल अमाउंट ट्रांसमिटेड, वेरी हाई एब्जॉर्प्शन। सो डायग्राम की टर्म्स में ये बोन का डायग्राम कुछ इस तरीके से बन जाएगा कि सब कुछ ब्लॉक हो जाएगा, हार्डली एनीथिंग पासिस थ्रू, काइंड ऑफ लाइक दिस। सारा कुछ ब्लॉक हो रहा है, पास कुछ भी नहीं हो रहा। तो दैट इज द केस कि जहां पर आपकी जो फिल्म होगी इसके ऊपर देयर इज गोइंग टू बी वेरी लिटिल एक्सपोजर, एंड दैट एक्सप्लेन्स व्हाई आपकी बोन का जो इमेज बनता है वो आपका प्योर वाइट कलर का बनता है ना। सो इफ इन केस इफ यू आर वंडरिंग कि सर ने आधा घंटा अपना क्यों बर्बाद किया है अटेन्युएशन समझाने में, सो अटेन्युएशन की रेलेवेंस ये है कि अटेन्युएशन डिटरमिन करता है व्हाट काइंड ऑफ एक्सपोजर विल यू गेट। सही है। सो इट्स बेसिकली दिस फॉर्मूला which determines whether the image formation will be close to a black color, will it be close to a gray color, or will it be close to a white color. तो जो एक्सरे का फाइनल शेप बनता है, कलर आता है, कॉन्ट्रास्ट आता है, ब्लैक और व्हाइट का एक्सपोजर आता है, ये सारी की सारी बैकग्राउंड थ्योरी अटेन्युएशन कवर करती है। ठीक है। तो बेसिकली नाउ वी कैन से, would you agree with this statement? A good contrast can be established if X-ray image involves bone versus flesh। है ना, ये मेरा ख्याल है आप सब अग्री करेंगे मैंने क्या लिखा है। बिकॉज बोन के अंदर यू विल बी एबल टू सी वाइट कलर प्रीडोमिनेंटली, और फ्लैश के अंदर यू विल बी एबल टू सी ब्लैक कलर प्रीडोमिनेंटली। सो अ वेल डिफाइंड कॉन्ट्रास्ट विल बी अचीव्ड।
Now, on the other hand, I'm sure you would also appreciate my next statement. The contrast will not be very well defined on a comparative scalar. The contrast will not be very well defined if X-ray image involves bone versus soft tissue. Because one shows a perfectly white picture and the other one kind of a gray tone. So you will not get a very well developed contrast or a very well defined contrast if you are trying to look for an image distinguishing bone and a soft tissue, white and gray. So this is how basically the idea of attenuation is important, because the idea of attenuation provides us with a guideline कि कौन से regions का अच्छा contrast बनेगा और कौन से regions का एक अच्छा contrast नहीं बनेगा. See, so it all depends on medium का absorbing power कितना है. सही है. So इस तरह से learn करना बहुत sensible है कि if the result is close to 1, if the result is close to 1, if the result is close to 1, approximately equal to 1, very little absorption, maximum penetration. So this basically gives you the black color. And if the fraction is close to 0, then it's the exact reversal. Maximum absorption, very little transmission. So this results in a white colored image. So yes, so in short, attenuation की ये relevance है कि attenuation determines how good of a contrast can be generated if X-rays are used to obtain images through a human body. सही. अब इसमें एक आखिरी चीज बतानी है, and that is how would a graph of intensity against thickness looks like for different mediums. Example, soft tissue, flesh, and bone. तो मैं एक ही एक्सिस पे तीनों के ग्राफ्स बनाता हूं so that we can make a fair comparison with regards to कि तीनों में क्या distinction होगी. Now just keep one thing in mind. Bone absorbs everything. So intensity should drastically fall. ठीक है. So अगर आप ओके हैं मेरे स्टेटमेंट के साथ कि bone literally absorbs everything, intensity will reduce to 0 over a very small thickness. तो जो रेड कलर से ग्राफ बना रहा हूं ना, ये बोन के लिए बेस्ट होगा. I'm starting from I naught.
and I'm dropping down the graph very very quickly down to 0. ये ग्राफ बोन के लिए होगा, और यू कैन से ये ग्राफ ऐसे मटेरियल के लिए होगा जिसकी म्यू की वैल्यू इज वेरी हाई. So a high value of mu means maximum absorption. So the intensity drastically drops down to 0. ये एक सिनेरियो हो गया. अच्छा, अब मैं एक और बना रहा हूँ. जो ब्लू वाला है, ये तो ड्रॉप तो ये भी कर रहा है, बट एट अ वेरी स्लो पेस. आई थिंक ये ब्लू वाला जो ग्राफ होगा, इसके लिए यू वुड अग्री विथ मी कि ये ग्राफ होना चाहिए है फ्लैश के लिए, where the value of mu was very low. So hardly any absorption. So intensity will reduce to 0 over a very very long thickness. बहुत देर के बाद जाकर आपके पास इंटेंसिटी ड्रॉप डाउन करेगी. और जो ग्रीन कलर से बना रहा हूं समवेयर इन बिटवीन, ये फिर आपका सॉफ्ट टिश्यू का बन जाएगा, where the value of mu is going to be somewhat of a medium nature. सही है. सर in terms of color, वो जो फ्लैश वाला था ना, that was all black, jet black, because most of the amount was able to get transmitted. जो ग्रीन वाला ग्राफ है, that was the gray वाला tone, some absorption some transmission. और जो रेड वाला है, that was pure white, everything is absorbed, hardly anything is transmitted. See, so graphically this is how you can represent the relation. Now one last thing, फिर मैं conclude करता हूँ. Last working is concept of half value thickness. So some students refer to half value thickness by this term, and some students refer to half value thickness by this term. Now, before I move on to the meaning of the term half value thickness, remember previously, just a while back, a few classes back, we did concept of half-life. Half-life was denoted by this symbol. We defined half-life as the time taken for the activity to reduce to half of its initial value. और हमने फॉर्मूला भी किया था हाफ लाइफ का. This was the formula. Where lambda was decay constant. है ना? So अगर हम लोगों ने हाफ लाइफ का ये फॉर्मूला किया हुआ था, then surely उसकी बेसिस पर we can conclude half value thickness is defined as the thickness of the medium which causes the intensity of X-ray to reduce to half of its initial value. Same definition. ठीक है? The thickness over which the intensity will reduce to 50% of its initial value. अगर आपको इसके लिए फॉर्मूला जज करना हो, तो नीचे वाला फॉर्मूला देखकर आप ऊपर वाला फॉर्मूला खुद ही जस्टिफाई करें. एंड दिस वुड बी द फॉर्मूला. सेम फॉर्मूला लिख रहा हूं. टी हाफ की जगह एक्स हाफ आ जाएगा 0.693. lambda was a constant,
यहाँ पे म्यू आ जाएगा. लैम्डा वाज योर डिके कांस्टेंट, म्यू विल बी योर लीनियर एब्जॉर्प्शन कांस्टेंट. ठीक है. तो अभी तक हम लोगों ने आज वाली क्लास में पहले तो ये डिस्कस कर लिया कि एक्सरेज की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं. फिर इसके बाद डिस्कस किया एक्सरेज की प्रोडक्शन का मैकेनिज्म क्या होता है. फिर ये डिस्कस किया एक्सरेज की इंटेंसिटी को कैसे कंट्रोल करते हैं, फर्स्ट पॉइंट. एक्सरेज की फ्रीक्वेंसी को कैसे कंट्रोल करते हैं, सेकंड पॉइंट. सॉफ्ट एक्सरेज को कैसे स्टॉप करते हैं, थर्ड पॉइंट. कट ऑफ वेवलेंथ क्या होती है, फोर्थ पॉइंट. तो वो सारा कुछ टॉपिक थ्योरी के पोर्शन में आ गया था. फिर इसके बाद हमने ये डिस्कस किया कि अटेन्युएशन का मतलब क्या होता है, तो डेफिनेशन करी. फिर फर्दर ये डिस्कस किया कि when intensity is going to pass through a certain medium, then the incident amount and the transmitted amount are known to be interrelated according to the given equation. तो उस इक्वेशन को देख लिया. इसके बाद ये डिस्कस किया कि उस इक्वेशन को हम अप्लाई कैसे करेंगे. और जी रोहेल, ln 0.5 की वजह से वो 0.693 आया था, दैट इज राइट. सो फिर हमने ये देखा कि यार हमारे पास म्यू, तो इसके बाद हमने ये देखा कि यार हमारे पास डिफरेंट मीडियम्स के लिए हाउ कैन वी डिटरमिन, आर वी गोइंग टू गेट अ ब्लैक इमेज, आर वी गोइंग टू गेट अ ग्रे इमेज, आर वी गोइंग टू गेट अ वाइट इमेज. और फर्दर हमने ये भी डिस्कस कर लिया कि ग्राफ का शेप डिफरेंट मीडियम्स के लिए किस तरह का बनेगा, तो वो भी आपको यहाँ पे नजर आ रहा है ना. और लास्टली हमने ये देख लिया कि गुड कॉन्ट्रास्ट किन जगहों पे क्रिएट होगा और किस जगह पर आपका गुड कॉन्ट्रास्ट क्रिएट नहीं होगा. तब एक चीज और बतानी है, तो मैं इसकी डेफिनेशंस लिख लूं और फिर नेक्स्ट वाली क्लास के अंदर आई गेस इसको कंटिन्यू कर लूंगा. सो ये थर्ड पेज पे जा रहा हूं मैं. ये बस एक चीज करा दूं, फिर नेक्स्ट वाली क्लास के अंदर आई कंटिन्यू विद दिस जहां पे मैंने स्टॉप किया होगा. ठीक है. तो एक लास्ट चीज जो रह गई है, दैट इज ये थ्योरी वाला पोर्शन है, क्वालिटी ऑफ एन इमेज produced by an X-ray tube. Okay, I think I need to just refresh the page again. Sorry, guys. Quality of an image produced by an X-ray tube. Does anyone have any idea कि ये जब मैं लिख रहा होता हूँ, so at times अभी जिस तरह erase होना शुरू हो गया था ना, is that the glitch of a OneNote or is that a glitch of the stylus? कि कभी कभी आप लिखते हो और वो ऑटोमेटिकली इरेज आउट हो जाता है, ये स्टाइलिस का इशू है या ये वन नोट का ग्लिच है? वन नोट प्रोबेबली. ओके. तो अगर स्टाइलिस खराब हो तो उसकी वजह से ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता रोहित? डज द स्टाइलिस हैव अ बटन? यस इट डज. बट मैंने उस बटन को डीएक्टिवेट किया हुआ है उमर, सो आई डोंट थिंक उसकी वजह से हो रहा होगा, बिकॉज अदरवाइज वो बटन तो यूजुअली इरेज के लिए यूज होता है ना. बट मैंने उसको डीएक्टिवेट किया हुआ होगा, तो इट्स नॉट दैट कि वो मुझसे गलती से हाथ लग गया हो. हाँ, आई गेस यू राइट कि अगर वो रिफ्रेश होने के बाद ओके. तो क्वालिटी ऑफ एन इमेज प्रोड्यूस्ड बाय एन एक्सरे ट्यूब, ये बस जरा वर्डिंग्स देख लो और फिर मैं यहाँ कंक्लूड करूंगा. द क्वालिटी ऑफ
an image depends upon two factors. ये factors भी learn करने के हैं because ये exams में आते हैं. First factor, sharpness. Second factor, contrast. So, I think जो लोग cell phones की cameras को काफी closely compare कर रहे होते हैं ना, कि iPhone का कैमरा ज्यादा अच्छा है या किसी Android device का है, they are very well versed with these two terms. तो अगर आप normally किसी टेक रिव्यूअर को भी फॉलो कर रहे होते हो ना, सो ऑन यूट्यूब जब वो दो इमेजेस को कंपेयर कर रहे होते हैं, यू कैन क्लियरली सी देम ट्रांसलेटिंग इनटू दीज टू टर्म्स. फिर हम फिजिक्स के अंदर प्योरली मेडिकल सेंस में ह्यूमन बॉडी के एस्पेक्ट से हाउ डू वी डिफाइन द टर्म शार्पनेस एंड हाउ डू वी डिफाइन द टर्म कॉन्ट्रास्ट. शार्पनेस आप किस चीज को कहते हो? तो व्हेन यू यूज अ मोबाइल कैमरा, लेट्स से mobile phone, to capture an image, when do we classify that image to be a sharp image? Sharpness is defined as the ease with which the ease with which the edges of a structure can be determined. ठीक है, आप किसी भी स्ट्रक्चर के एजेस को कितनी आसानी से डिटरमिन कर सकते हो. So a sharp image is one in which the edges are well defined. Okay. Then what is contrast? So contrast is defined as the ease with which one structure one whatever inside the human body, one structure can be differentiated from the other. ठीक है, so contrast is how clearly can you differentiate between two organs. Sharpness is how clearly can you observe the edges of an organ, if that makes sense. वापस कह रहा हूँ, contrast is the ease with which one organ can be differentiated from another. Sharpness is the ease with which the edges of an organ can be seen. So, last statement, a good contrast exposure of or no blackening as well as areas with
heavy blackening. सही है. So and contrast क्लास में इसके आगे कंटिन्यू करूंगा. रोहिल ने with which one the clarity with which one organ or one structure can be distinguished from another organ or another structure, that's the contrast. And the ease with which the edges of a particular organ can be seen, that is your sharpness. ठीक है guys, यहाँ conclude कर रहा हूँ. So thank you guys, take care and khuda hafiz for today.